बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अयाज महमूद। आप देख रहे हैं टेक्निकल चैप्टर्स। इससे पहले जो हमने वीडियो शेयर की थी इंटरव्यू के ऊपर, उस कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे जो आखिर में जो हमने उस वीडियो में सवाल पूछे थे, उनके जवाबात भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। What steps you need to configure equipment? So what you will do if you are going on the site and if the installation is finished, what you will do? First of all, we will go for physical inspection, switch on the DC power, any software upgrade if required, any name, TID means target identifier, unique name of the network element, any components configuration, any visibility with the NOC, OMS release 15, 16 or 13. It depend on the current OMS release for the server for the NOC, and for Nokia Alcatel-Lucent, and U2000 for Huawei equipment services. What is mux ponder? Optical mux ponder, it converts n number of the inputs, black and white signals, to one optical wavelength useful to be transmitted over DWDM or CWDM networks. And what is the function of the DCM? DCM, Dispersion Compensation Module. DCM module deals with the accumulated chromatic dispersions without dropping and generating the wavelengths on the links. जो जब हम कोई लाइट ट्रांसमिट करते हैं किसी भी मीडियम में, एयर में या ग्लास में, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस और वेवलेंथ, उसके मुताबिक थोड़ी डिस्टेंस के बाद वो डिस्पर्स होना शुरू हो जाती है, जिससे उसकी पावर वीक हो जाती है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये मॉड्यूल यूज़ किया जाता है। और DCM जो की कैलकुलेशन जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और वेवलेंथ और डिस्टेंस। ओके, व्हाट इज़ द स्पैम लॉस? The DWDM. What is the power budget for the link in optical network? Optical power budget and spam loss, they have close relations. For the spam loss, we just check the TX power from one end. For example, if it is plus 1 dBm and other end receive power is minus 9.5 dBm, so means plus 1 TX power minus 9.5 is equal to minus 8.5 dB loss. So this 5 minus 8.5 dB loss is called spam loss. So spam loss reasons are the same as we calculate for the power budget. So means if we make a TX power reference 0 dB TX power, so then in the link we will have the ODF connector loss 0.25 to 0.5 dB, and the splice losses for the fusion splicing 0.02 to 0.05 dB, and fiber attenuations depend on the distance, and distance loss like we calculate for the 1550 long distance 0.25 kilometer for the single mode fiber. Also attenuation and dispersions, everything is included in the power budget. So can you tell me the voltage AC or DC we use for the equipment? How many volts we need for the telecommunication equipments? What is the standard voltage level? Network elements power. Direct current DC minus 48 volt. Nowadays we use minus 48 volt in the exchanges, plus positive terminal we use for the grounding. Working range for the equipment is minus 40 to minus 53 for the SDH and R related equipments, and new NE range is minus 48 to minus 60, because some OTN systems and some DWDMs are working on minus 60 volt, and some new NE range is minus 48 to minus 72 volts. So in the exchange the arrangement, DC arrangement is minus 48 volt, and but in the systems, in the power filter there is
they converts minus 48 volt to minus 72 volt or minus 60 volt. सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वीडियो को लाइक करते हैं, और भी दोस्त जितने भी जो इस वीडियो को देखें वो लाइक भी करें, शेयर भी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका हासिल हो वक्त पर जैसी वीडियो अपलोड करूं। अल्लाह हाफिज़।